morning everyone. Welcome back to your channel The Nation Needs You. Today class is very special for the people those who have still confusion regarding want, need, require, should and must. So in today's session, we are going to discuss the usage of all the words that I have written here. I am Mishra, soft skill trainer, Bhubaneswar, Odisha. In this class, let's understand thoroughly the usage of all the 5 words which I have written here. It seems difficult, like let's say it's difficult for few people to talk in English for a long time. But it is possible when you have some basic knowledge, which through you are going to make multiple sentences. Those who are the fluent speaker in today's world, what happened? They are ready to build sentence. And those who are unable to express their idea, they talk, they hesitate to talk. The only problem is English word power, and one more is sentence construction. If your sentence structure is clear, the basic is clear, there is no rocket science, or you no need to be in a fool's paradise that you are not able to speak English. Yes, it is possible. And in this lesson, I will allow you to make some sentences. So the target today is what everyone? Want, need, require, should and must. If you look at it thoroughly, ये सबका मतलब होता है चाहिए. मेरे को एक चौकी, मेरे को एक क्या चाहिए? एक बड़ा घर चाहिए, लग्जूरियस. मेरे को एक कार चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए. राम को 2 पीस ऑफ फिश चाहिए. सो सबको कुछ ना कुछ चाहिए दुनिया में. तो ये सारी चीज़ के लिए हम सारे वर्ड हैं, लेकिन इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे. So first let's talk about our first word, which is called want here. Let's understand want very clearly. So remember always that when the want is used, if you are going to show or it's talk about any sense of normal desire, साधारण इच्छा के लिए, नॉर्मल बातें के लिए, नॉर्मल विशेष के लिए हम क्या लगा सकते हैं? want लगा सकते हैं. मुझे एक कलम चाहिए, I want a pen. मुझे ग्लास ऑफ पानी वाटर चाहिए, I want a glass of water. But this not sound well. मुझे एक कार चाहिए, I want a car. Yes, we can make. But remember one thing, you must clear about the structure, then only you are able to form multiple sentences. And मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए लिया है. द फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एवरीवन इज सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स. देन और यू कैन से वांटेड था के सेंस में लगेगा, और टू प्लस वर्ब वन एंड अदर वर्ड. इट मीन्स ये इंडिकेट करता है चाहता हूँ. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर. चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर. उसको एक कार चाहिए, शी वॉन्ट्स ए कार. येस, वी कैन से व्हेन योर सब्जेक्ट बिकम ही एंड सी थर्ड पर्सन, यू आर गोइंग टू यूज दैट वर्ड वॉन्ट्स. एस लग जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ये सेंस आता है चाहता हूँ के सेंस में. तो अब अभी जितना मन मर्जी चाहिए, आप कितने भी सेंटेंस चाहिए आप लगा सकते हैं. लेकिन जब मैं बोलता हूँ चाहता हूँ और चाहिए के सेंस में क्या करेंगे? जैसे एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, सब्जेक्ट के साथ वांट, वांट्स, ए और एन आप आर्टिकल लगा सकते हैं, प्लस एडजेक्टिव और नाउन है. मैं बोलूँगा कि राम को एक रेड कलर का टी शर्ट चाहिए, तो इसको क्या बोलूँगा? राम वांट्स अ रेड कलर टी शर्ट. क्योंकि रेड क्या है? आपका एडजेक्टिव है.
तो इसी सेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू फॉर्मेट, टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, नंबर 1 and 2. ट्राई टू मेक मल्टीपल सेंटेंस विद दिस पर्टिकुलर वर्ड want. अगर पास्ट है आपका तो wanted भी कर सकते हैं. And in English there is a series of words that I am going to teach in this particular YouTube channel, The Nation Needs You. So those who are new to the channel, kindly subscribe it to make yourself like to get updated always with new thing in English. Anyhow, we discuss a little bit about want. Okay, so let's see. Okay, now we'll moving for the next word. The want is over here. Now we are moving for need. Let's understand need now together. Okay, so now let's talk about our another word called need. Need भी कब ज़रूरत होता है, कब चाहिए हमको need? Let's see इसका हमारा अगर पैटर्न क्या है. सब्जेक्ट के साथ need या needs कर सकते हैं और आप needed भी कर सकते हैं प्लस नाउन और अदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ए सेंटेंस हियर, आई नीड अ पेन. क्या चाहिए मुझे, एक पेन चाहिए. आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर. दिस वर्ड चाहिए के सेंस में हम लगा सकते हैं विद द सेम स्ट्रक्चर. ओके, एंड नाउ हियर व्हाट यू कैन मेक अदर सेंटेंसेस ऑल्सो. ओके, मुझे जाना चाहिए, आई नीड टू गो. यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो. Okay, when it's come to require, the another one is what? Require is always talk about luxurious thing. मुझे एक बोतल दारू चाहिए. What I can say? I require what? I require a bottle of wine. Right? तो मुझे एक सिगरेट पैकेट चाहिए. I require a packet of cigarette. Right? So when you are talking about luxurious thing, then you are going to use what? Require. And now here you can use subject, require, requires, required plus noun plus other word. If you want, you can also use article in it. And now coming to the another one, that is what? Should. And when to use should? When something is let's say you are giving any type of advice, VISC. If you are giving what? Any kind of advice, let's say you should listen to your parents. आपको आपके पेरेंट को सुनना चाहिए. ओके, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ शुड, वर्ब का पहला फॉर्म कर लीजिए. यू शुड ज्वाइन द क्लास रेगुलरली फॉर इम्प्रूविंग योर बेसिक ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल. यू शुड ज्वाइन मिश्रा सर स्पोकन क्लासेस. लाइक दिस, ट्राई टू मेक मल्टीपल सेंटेंसेस. And this thing will give you confidence definitely. But when it's come to must, then what? Must means which is what? Urgent advice. What is that? Urgent advice. You see, when Corona came to Odisha, the government what? Declare or what? Share some protocol, rules and regulation. So we must follow the corona or COVID guideline. You must listen to your teacher. मतलब अर्जेंट एडवाइस में करना चाहिए, पक्का करना चाहिए. लेट्स से यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल. लेट्स से किसी को अगर एक नेगेटिव वर्ड बोलूँगा, तुमको पक्का मानना चाहिए, यू मस्ट डाई और ही मस्ट डाई, वी से. राइट, हियर व्हाट? मस्ट मीन समथिंग कंपल्सन एंड कंपल्सरी. लेट्स से यू मस्ट गो नाउ, आपको अभी पक्का जाना चाहिए. सो हियर सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस verb 1 plus other word. You can use other word. So when you are talking with people all the time, you are using all the word. I want to meet you. She wants to meet me. Need, I need to go. I think he need 10 rupees. Require, I require a seaside bungalow for my parents. Okay. Should, you should obey your teacher. What? You should obey your teacher. You should listen to me.
Okay, not only these positive sentences, but also you can make negative sentences also with the word. Like should become should not, need become needn't, and want what? Don't want. I want to be a doctor, I don't want to be a doctor. So for want you can try another word, wanna. I wanna be a doctor, I wanna go means what? I want to go. In short form we are using this. So we saw here want, need, require, should and must. Alright. So in this lesson we learn all these things. Now there is a task for you. Try to create at least 5 sentences for each word. And at down you have my mobile number. Send it to my WhatsApp number. Let me check whether you are able to create perfect sentence or not. If there is any modification, I will let you know. And thank you so much for watching today's video. I will meet you student with my new class in another day. Thank you so much for watching. Jai Hind.